So for now, I'll be teaching what is improper and improper. So the thing about proper fractions is, let's take for example 3 over 12. Okay. So is 3 less or greater than 12? Less. Less. It is less. That's what makes it proper. But improper fractions, the numerator is greater than the denominator. Like instead 12 over 11. This is improper. Okay? Do you guys understand? Okay. So I'm going to write some examples and maybe you guys can answer. Let me just erase this. Okay, so I'm going to write down some examples and then you raise your hand and then you can answer. Yes, Manha? Would you like to answer? Yes, ma'am. Okay, answer this one first. 3 over 4. Is it proper or improper? It's an improper fraction. It's an proper fraction. Sorry. Yes, good job. This is a proper fraction. Okay, who wants to answer the next one? इसका मुझे पुस्तक में किसी का नाम लिया था. Excuse me, teacher, my answer? Who is speaking? Margin for Chopra. Okay, so what is 5 over 3? Is it proper or is it improper? Improper. Good job, because the numerator is greater than the denominator. What about this one? Improper! No, it's not improper. It's proper. 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 Proper fraction! Okay. So is 6 over 12 proper or improper? Proper fraction! Proper fraction. Yes, good job. Proper fraction. What about 13 over 1? It's improper. Improper. Improper! Okay. Improper. Improper. Maybe you can just, in the chat, maybe you write the answers. Is that okay?
Okay. What about 4/6? Proper fraction. Okay. That is right. It's a proper fraction. Note about 5/12. Proper fraction. Halima, please. Proper fraction. Halima, please write in the chat, okay? What about 21/3? Improper fraction. So does everyone understand the difference between proper and improper? Improper. Yes, ma'am. Yes. 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 So let's move on. So now we will do converting improper fractions into mixed numbers. Does anybody know how, or should I teach you? So, Teacher, I do not know. okay, it's okay. I'll teach you. Wait a minute, please. Okay. So let's take, for example, 3/12. So, wait, this isn't an improper. 12/3. Okay. So now we want to turn this number into a mixed number. So do you guys know how to do long division? No. Yes. Okay, I'll teach you. So this is long division. Like, take for example some numbers that aren't in the same times table. So let's take for example 3 and 13. So think about it. What is the nearest number that comes close to 13 in the times table of 3? 12. And what times 3 gives you 12? 4. Yes, so now you have to put the 4 up here, and then you have to write the 12 here. What is 13 minus 12? 1. Okay, so see, this means that the answer is going to be 4, remainder 1. Does everybody understand, or should I repeat? I understand. Ma'am, I understand. Okay, let's do another example, and raise your hand if you want to do the other example. Okay, what about Ishal Fatim? Okay, let's see something more difficult. Maybe 7 and 48. Wait, no, not 48. Maybe 37. Let's make it easier. So what is the nearest thing that comes to 37 in the times table of 7? Teacher, 7 times 5, 35. Mazen, it's Ishal Fatima's turn, not yours. Ma'am, 7 5s are 35.
Yes, good job. Next is 237. So it's gonna be a 5 over here and 35 here. So what's 37 minus 35? Uh, 2. Two. Two is remaining. Halima, it's Ishal Fatima's turn now. So the answer is gonna be 5, remainder 2. Okay. Now let me tell you how to turn an improper fraction into a mixed number. Okay, so it's very easy and it's very simple. So now you need to write the denominator here and the numerator in here. So everybody knows that it's 4, okay? Excuse So me, teacher, I can't see. you can't see. It might be your internet problem. Can everybody else see? Yes. Yes, then just your internet problem. Wait, I'm just gonna. You should maybe leave and rejoin because I don't know what to do. Okay, let's wait for them. Okay, now can you see the screen? Now can you see the screen, guys? Okay, so 3 is gonna be here and 13 is gonna be inside the chair. This is called a chair, okay? So what is the nearest thing that comes to 13? We already did this example and it's gonna be 12 with 4. So now it's gonna be 1, obviously. So now look at this. So the quotient is gonna be, no, not the quotient, the denominator is gonna stay the denominator, okay? The quotient is gonna be the whole number and the remainder is gonna be the numerator. Does everybody understand how? Teacher, can you repeat? And can you do it again? I am not understanding. Okay, I'll repeat again. Yes. So wait a minute, please. Okay, so let's take something harder, like 4 and wait. Okay, so 4 over 38. Okay, so first you make this, and then you put the 4 over here, and the 38 over here. Wait, I'm doing it wrong.
Okay. So what is the nearest thing that you can get 38 in the times table of 4? 36. 36. Yes, but what times 4 gives you 36? 4 nines are 36. Yes, good job. Miss, are you writing something? Yes, I am writing something. I cannot see the screen. You can't see the screen? Well, I'm just going to stop the sharing and I'll open again. Okay. Now can you see? Now can you guys see? Yes. Okay, Yes, so teacher. 38 Yeah. over 4. Yes. So we put the denominator here Yes. and the numerator here. And like Mazen said, this is gonna be 36 here and 9 here. So what's 38 minus 6? I mean minus 36. सबसे पहले करवाया रहे 2. Left with 2. Yes, okay, it's 2. So remember that the denominator shall stay the same. The whole number will be the quotient and the remainder shall be the numerator. Now, do you understand? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. Now, who wants to do one of the Yes. examples I'm going to give you? Who wants to do the example? What about Manhanadin? Yes, Okay. miss. You want to do the example? Yes. Okay. So, let me just think of a good example. Maybe 5 and 32. Okay. So it's going the improper fraction of this is gonna be 32 over 5. Okay. So now all you have to do is do the long division, right? So Yes. what is 5 divided by 32? What's the nearest thing you can get? 5 6 are 30. Yes, good job. So you put the 6 here. So it's 32 minus 30. 2. Good 2. job. 2. So how are we gonna write the mixed number? 6 question as a whole number, and 2 will be the numerator and 5 will be the denominator. Good job. You did it right. Okay. So let's do one more example and then we'll move to the next thing. Okay. So what about Azra? You can do it now. Okay, let's see, maybe 9 and 43. So the thing is gonna be 43 over 9. Okay, so Azra, now tell me what times 9 is very near to 43.
Hmm? Yes, good job. So we're gonna write 36 here. And what are we gonna write here? 4. Good job. So what's 43 minus 36? Tell me the steps of how to do it. 7. What do you say? 7. 7. Yes. Because we cross this and make it 3 and this is 13, so it's 7. And good job, you got the answer right. So now tell me how we're gonna write it into a mixed number. 4 will be the whole number, 9 will be the denominator, 7 will be the numerator. Good job. Okay, just wait here for a second. Okay, so did you understand this topic? Yeah. Yes. Okay, so I'm just sharing one worksheet on the screen so that you can solve it and submit it. Just 1 minute. Um, okay, I'm sharing the worksheet on the screen. You just have to do. Yes, we have to do it. You have to do it on the screen. Can you write on the screen? Yes. Okay, we have 9 participants. So you can select one color each. Tuba, can you tell them the color? Like Mazen can have green, Aisha, Adil can have blue. Purple? Okay. Tuba, you can give them the color so that you just have to do first 9. Tuba, give them the colors. Ma'am, I cannot solve it. Can you edit it? Can you draw on it? Okay. So I'm gonna give everybody a color. So who wants which color? Tell me. Tell me in the chat which color do you want. You want purple? Okay. So your color is purple now. Now Aisha, you do number 1. Rida, you can do number 2 in red. Okay. What about the others? Which colors do you want? Okay, Manha, you can have yellow. Rida, maybe you should do it not taking the entire page because others need to do it also.
Maybe, yes, make it smaller. Okay, Manha, do question number 3 in yellow. What about Ishal Fatma? Ma'am, I am unable to do it because of my device. Maybe do question number 4 on a paper and then you can show me the paper. Send it in the group, okay? Okay. What about the others? There's still lots of people left. Masin, which color do you want? सिखा रही है Arisha. What did you say? Green. What did you say, Masin? Green. Can you type it in the chat? I can't hear you properly. Excuse me, teacher. Green. Okay, yes, you can have green. Do question number 5 in green. Teacher, can I do it on a paper? Okay. Miswritten my answer. Okay, those who are unable to write on the screen, they can just do it on the paper and submit it in the group. I think Miss Arisha is joining soon. Miss done writing my answer. Okay, thank you so much. Abu Darao. Uzair Darao. Okay, so welcome back, Miss Arisha. Oh, wow, you are with the whiteboard. So good. So, Miss Arisha, Tuba just explained how to convert improper fractions to mixed number. So they had practiced as well, but you can continue with your class, no problem, okay? So I'm just stopping the worksheet. So Miss Arisha, you can unmute your mic and you can explain the fractions to them, okay? Yes, ma'am. So, can anyone see my screen? Yes. Assalamu alaikum. My name is Arisha and I am 11 years old. So I am your maths teacher today. I will tell you how to solve the maths problem of fractions. Okay. So let's start. Today's topic is fractions, and we will learn two topics today: intro to fraction and complementary fractions. Okay. So when we learn fractions, जब हम fractions जो है पढ़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि fractions होता क्या है. तो what are fractions? What are fractions? Can anyone hear me? Yes, we can hear you clearly, Miss Arisha. You can continue. Okay. So what are fractions? Fractions are parts.
फ्रैक्शन जो है पार्ट्स होते हैं। जब भी हम किसी चीज का जो है पार्ट बनाते हैं तो वो हम उसको फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अगर जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रैक्शंस के अंदर टू वैल्यूज होती हैं, एक होती है न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन की बेसिक मीनिंग थी। अब जो है क्या होता है न्यूमरेटर और क्या होता है डिनोमिनेटर। अब मैं आपको एक जो है वैल्यू दूं, ये यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसको मैं 4 पीसेस के अंदर कट कर दूंगी, ठीक है। मैंने इसको 4 पीसेस में किया है। अब मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगी। ये मैंने 2 जो है पीसेस को कलर कर दिया। अब मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगी तो क्या बनेगा, 2 बिग करो and 4, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिया है और ये इसके 4 पीस करे हैं। 4 पीस करने के बाद मैंने इसके 2 पार्ट्स ले लिए, सही है, या फिर मैंने किसी को दे दिए। तो मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगी तो क्या बनेगा, 2/4, सही है। अब ये जैसे मैंने बताया था कि 2 वैल्यूज होती है फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन है 2 वैल्यूज और समटाइम्स 3 वैल्यूज, ओके। फ्रैक्शन हैज 2 वैल्यूज। तो यहाँ पे जब हम आए, इस डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे वाला होता है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके। और सेकंड जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, ओके। और ये जिससे डिवाइड होता है इसको क्या बोलेंगे, ये है साइन डिवाइड का, सही है, इसको हम बोलेंगे डिवाइड, जिससे ही डिवाइड हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं मैंने ये 4 और 2 क्यों लिखा है इधर। देखिए, जो डिनोमिनेटर होता है वो उसके अंदर टोटल आता है, टोटल पार्ट्स या फिर टोटल टॉफीज, जैसे आप अपना वो कर रहे हैं, या फिर टोटल पीसेस, तो या फिर अगर हम किसी जैसे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं, टोटल स्लाइसेस, ओके, ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर ये सब आता है, सही है। तो अब जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया था, इसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड किया था, इसके टोटल पीसेस कितने हैं, 4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अंदर टोटल आते हैं ना, तो मैंने इसको 4 थे पीसेस तो मैंने 4 लिख दिया, सही है। अब मैंने ये 2 क्यों लिखा, 2 इसलिए लिखा क्योंकि न्यूमरेटर ये होता है जब हम कोई चीज लेते हैं या फिर कोई चीज दे देते हैं, किसी को दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए थे और उसमें से 2 को ले लिया, सही है। अब मतलब ये है ही नहीं, अब मैंने इसको ले लिया, बाकी 4 पीसेस में से अभी 2 पीसेस मैंने ले लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। तो मैंने इधर 2 लिख दिया, सही है ना। अब जो है ये कंप्लीट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको समझ आ गया, ओके। तो अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। Okay, no one has some problem? Okay, so I will proceed now. So यहाँ पे जब हमने ये सीख लिया है, तो अब जो है यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ये हमने बनाया ना, मैंने इसको देख के ये बनाया, इस स्क्वायर को देख के मैंने ये जो है पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट किया है। वैसे ही अब मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। मैंने जैसे ये रेक्टेंगल लिया है, सही है। अब मैंने इसके 1 2 3 और 4 और ये 8 पीसेस हो गए, इसके 8 पीसेस हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, पहले मैं इसको यहाँ से कलर कर देती हूँ, 1 2 3 और 4 पीसेस मैंने कलर कर दिए इसके। अब आप इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसका फ्रैक्शन ऐसे बनेगा कि टोटल पीसेस पहले आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस है इसके टोटल, तो हम इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जिसको मैंने कलर किया हुआ, मतलब मैंने ले लिया या फिर किसी को दे दिया, तो वो हम क्या कहाँ लिखेंगे, कितने पीसेस हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, सही है।
अब यहाँ ये समझ आ गया। अब मैं जो हूँ एक सर्कल बनाती हूँ, सही है। अब मैं इसके एक पार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे 1 4 4 ये इसके पार्ट्स हो गए हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, 1 2 3। ओके, ये 8 पीसेस हो गए हैं इसके। और अब जो है मैं इसके अब हिस्से बना रही हूँ। पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हिस्से। तो अब मैं इसके हिस्से बनाऊंगी। ये 4 हो गए, अब ये है हो गए हैं 6 और ये 8। 8 किसी को अब आप इसको ऐसा ऐसा पिज्जा जो है सपोज करें, ये जो है, अब देखें ये एक पिज्जा है हमारे पास, उसके हमने 8 स्लाइसेस करे, सही है। अब हम आपने इसमें से 2 पीसेस जो है खा ली, सही है। अब आप इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? आप जल्दी से सब मुझे बना के दिखाएं। इसको फ्रैक्शन कैसे बनेगा? इसके टोटल 8 पीसेस हैं और 2 आपने खा लिए। विशाल फातिमा, is it wrong? It is wrong. Yes. Yes, Mazen, it is correct. Vishal Fatma, now it is correct. Arza Adil, it is correct. Good. Okay. Anyone done it? Tell me. Hurry up. Okay. With a shake, it is right. Correct. The variation. Yes. Have you done this question? Yes. So what is the answer? Tell me. No. I just joined. Okay. I just joined now. Okay. Hello? Anyone? किसी को अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं फिर आपको क्लियर कर दूंगी ताकि फिर हम आगे चलें। मैं बताऊँ, मुझे समझ में हाँ तो एक बार मैम प्लीज एक दफा रीड कर दें, रिपीट कर दें। ओके, आई विल रिपीट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि देखिए जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन के। अच्छा, देखिए अब आप देखें आपके पास जो है, जैसे आपके पास जो है 4 टॉफीज है, सही है। और आपको 2 टॉफीज अपनी फ्रेंड को देनी है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगी कि आपके पास कितनी टॉफीज है? 4 टॉफीज है। आपके पास है 4 टॉफीज, सही है। और आपको अपनी फ्रेंड को 2 टॉफीज देनी है, सही है। तो अब आप क्या करेंगी? सबसे पहले आपके पास कितने हैं ये पहले बात आएगी ना। आपके पास है 4 टोटल, तो आप क्या करेंगी? आप यहाँ पे लिखेंगे पहले टोटल पीसेस, डिनोमिनेटर में आएंगे 4, सही है। और जो आपको अपनी फ्रेंड को देने हैं वो है 2 पीसेस, 2 टॉफीज है, तो फिर वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। जैसे कि न्यूमरेटर ये होता है कि जब हम किसी चीज को देते हैं या फिर खुद ले लेते हैं या फिर खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिज्जा बताया था,
के 8 पीसेस थे, उसमें से आपने 2 पीसेस खा लिए, तो आपके पास क्या फ्रैक्शन बनेगा? आपके पास ये फ्रैक्शन बनेगा, ये आप लिखेंगी टोटल पीसेस कितने हैं इसमें 8 है, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 8 और जो हमने खाए हैं या फिर खा दिए हैं या फिर लिए हैं तो वो हमारे पीसेस है 2, तो हम वो लिखेंगे न्यूमरेटर के अंदर। You understand the video, Shaya? Yes. So, anyone else who has completed this question? Okay, can I proceed? Yes. I will give you some questions. These are not problems. I will tell you how to solve these. So, wait a minute. Yeah. Okay. So, this is an exercise. Okay. So, a class of 20 students of 20 class of 20 had 6 people. Had 6 people absent one day. Absent one day. And so now find the fraction of the absent student. हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका कि आपके पास एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, एक दिन 6 बच्चे स्कूल नहीं आए, ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है उन एब्सेंट स्टूडेंट्स का। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। ये आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ना ऐसे जब आएगी आपके पास तो ये होती है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, ये होती है वर्ड प्रॉब्लम। इट इज करेक्ट वजह है बच्चे। ओके, सो जब आपके पास टेस्ट में कोई क्वेश्चन आए, इट इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसको जब हम करते हैं तब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा ऐसे बनेगा कि आप जो है ऐसे करें, जैसे ये वाला जो है क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन कर लीजिए, ताकि फिर आप जो है इसको कर सकते। हाँ, तो आप लोगों ने ये जो है क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए। So question है, a class of 20 students had 6 people absent one day. Okay, a class of 20 students had 6 people absent one day. So now find the fraction of the absent student. Everyone has written it? Tell me in the chat box.
problem can solve like this. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा। डेटा अब हम डेटा कैसे बनाएंगे? डेटा हम लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास। पहले लिखेंगे टोटल है हमारे पास 20। यस, ये भी सब लिखते जाइए साथ साथ। सही, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 20। और एब्सेंट स्टूडेंट सिक्स। ओके, 6 एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इसका फ्रैक्शन ऐसे बनाएंगे कि जो टोटल स्टूडेंट जैसे डिनोमिनेटर के अंदर टोटल लिखते हैं ना, तो वैसे ही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपॉन डालेंगे, डिवाइड का साइन डालेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे 20 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर है। यस, और यहाँ और ऊपर जो है जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए हैं वो हम ऊपर लिखेंगे। तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया। Everyone understand it? Teacher, please repeat it again. Okay. So देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a class of 20 students। एक क्लास थी जो 20 स्टूडेंट, जिस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स थे और उस क्लास में 6 जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं आए थे एक दिन। ठीक है, 20 जो है स्टूडेंट थे एक क्लास के अंदर और उसमें से 6 स्टूडेंट्स नहीं आए थे। सही है, तो अब आपको इनका फ्रैक्शन ढूंढना है। जो बच्चे एब्सेंट थे उनका फ्रैक्शन ढूंढना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम टोटल चीजें ढूंढेंगे। टोटल कितनी है हमारे पास? 20 है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 है, तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 20। ओके, और जो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? हमारे पास 6 है। यस, 6 लिख दिया हमने। अब जो डिनोमिनेटर के अंदर टोटल पीपल या फिर टोटल चीजें लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे टोटल स्टूडेंट्स लिख दिया हमने। ओके, और जो एब्सेंट स्टूडेंट्स है वो हमने इधर लिख दिया न्यूमरेटर के अंदर, क्योंकि ये बच्चे नहीं आए थे और ये टोटल है। सही, तो इसका फ्रैक्शन ये बना कि 20 में से 6 बच्चे नहीं आए थे। आप सबको समझ आ गया? ओके, अब जो है सबको जब समझ आ गया है तो अभी अब मुझे इसका आप बताएंगे। मैं एक जो है वो बनाऊंगी फ्रैक्शन, उसका फिर आपको शेप बना के फिर बताना है मुझे। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिखती हूँ 6/12। ओ एक मिनट, 6/4/6। अब आप इसका फ्रैक्शन कैसे इसका शेप बना के मुझे जो है इसका वो बना के दिखाना है शेप कि कैसे बनेगा।
इधर से ये है 6 पीसेस तो हैं लेकिन ये 2 are colored नहीं है 2 colored नहीं है अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ देखिए ये 2 colored नहीं है 4 colored है अब आप देख लें ओके तो यहाँ पे आप तो कॉपी पे करें ताकि जो है वो शेप बना सकें जी शबिया मैं जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप मुझे भेज देंगी क्योंकि मेरे आज नाना हज पे जा रहे थे तो इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर सकती जल्दी। ओके जी शबिया ऋषा वो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो मैं YouTube पे अपलोड करके मैं भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? थैंक यू। Okay. So now everyone has done this question. So please tell me. Write down in the copy. Teacher, no. Okay, Javeria. Okay, I will give you a simple question. You don't have to make a shape. You have to make a fraction now. Okay. मैं आपको एक शेप बना रही हूँ शेप बना के देती हूँ उसका आप जो है ना अब इसका जो है मैंने हाफ कर दिया है अब आप मुझे इसका फ्रैक्शन बना के दिखाएं You have made it. Tell me the chat. all the answer. Yes. 1/2. Sorry, Sabia. Can you say it again? 1/2. Teacher, 1/2. Okay, you can write it on the chat box. Huh? 1/2. Javeria, write it on the chat box. So I will check all of yours. Correct, Mason. Okay. Correct, Shabia. So everyone is done. Yes, Aisha, it is correct. Now I will write the answer here. Okay. The answer is 1/2 because we have 2 parts altogether. So in total we will write in the denominator 2 and which color is taken, given or eaten or
So अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ मैं लिखूं कि count count two of count two of five equal parts of five equal parts. तो आप इसको क्या बनाएंगे? यहाँ लिखा है count two of five equal parts. तो ये लिखा है इन दो को काउंट करो 5 इक्वल पार्ट्स के. जैसा हमने लिखा था ना कि जब 5 इक्वल है तो 5 नीचे आएगा और 2 जैसे और जो है हमने 4 लिए हैं तो 4 ऊपर आएगा है ना. तो वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे जहाँ पे काउंट 2 है. जैसे देखें अब टोटल पार्ट्स है ना ये इक्वल पार्ट्स टोटल पार्ट्स देख लिया. ठीक है 5 इक्वल पार्ट्स तो लिखेंगे हम 5 डिनोमिनेटर के अंदर क्योंकि ये टोटल है. ठीक है और काउंट 2 है इसका न्यूमरेटर. ठीक है everyone understand it? Yes. So I will give you a question like this. You have to complete it. Okay. Count one of three equal parts. Do it. Teacher, 1/3? Yes, who said it? Margin for chapter. Okay, Madan, you are correct, but write it on the chat box, please. I will check all of yours. Correct, Shabia. Why did you write 1/3? Correct, correct. Correct, Shabia. Anyone? Okay. Is everyone done? I will proceed now. Okay. So let's check. Third question is count 3 of 50 equal parts. अब इसका क्या ये भी लिखिए. ये बताएं क्या होगा इसका count 3 of 50 equal parts. Write it down. Then I will give you a word problem to solve. Hurry up. We have to do the second topic also. Teacher, I've solved the problem. Yes. Now only we going to solve these, and we will move on to the next topic. Ma'am. Correct, Shabia? Place your voices. What?
सेम रहता है। ओके, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 4 टॉफीज थी और आपने एक टॉफी अपने फ्रेंड को दे दी, सही है। तो फिर आपके पास टॉफीज में जो फ्रैक्शन है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन है, वो क्या बचा है? वो आपके पास जैसे 3 प्लस है तो 4 आ गया ना आपके पास, तो 4 3 यहाँ पे प्लस करेंगे इसके साथ, इक्वल टू डाल के लिखेंगे, तो 3 + 1 क्या होता है? 4। यस, तो 4 हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर जैसे मैंने बताया कि सेम रहते हैं, तो 4 इधर ही लिखेंगे। उसके बाद अभी 4 4 जो है, तो अब आप देखेंगे कि ये सेम टेबल से कट हो रहा है कि नहीं, ये सेम टेबल से कट हो रहा है या नहीं। ये हो गया 1 से, ये भी 1 से। ओके, तो जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, तो हम जो है आंसर में सिर्फ एक 1 लिखते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो नंबर आया है, हमारे ये वाला जो नंबर है हमारे पास, जो हमने सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, वो हम लिखेंगे यहाँ पे 4/4 और इसको माइनस करेंगे जो हमारे पास नंबर था 1/4 से, किससे? 1/4 से। ओके, Miss Arisha, यस, I was thinking to keep this class till now. हम क्योंकि already 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो हम या तो आप होमवर्क दे दें बच्चों को, जो मतलब बेसिक फ्रैक्शंस का है, या जैसे आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे। यस, ओके, आई विल सेंड इट। ओके, और फिर अगर हम ग्रुप में पूछ लेंगे कि अगर किसी को मुश्किल हुई या किसी को दोबारा अगर पढ़ना हुआ, तो हम उनकी कल भी एक क्लास रख सकते हैं, इफ यू आर फ्री। यस, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है इसको पूरा करवा दूं, मुझे थोड़ा सा रह गया है, सही फिर है। मैं क्लास एंड। ठीक है, ओके, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। तो जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास सेम नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो हम लिखेंगे पहले, और जो हमारे पास जो टॉपिक जो हमारे पास जो नंबर आया था, जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में था, वो हम लिखेंगे माइनस करके उसके बाद। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 में से 1 माइनस करें, 3 बचा। यस, 4 में से 1 3 यस, 4 में से 1 माइनस करें, 3 बचा, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब आंसर तो हमारा ये वाला आएगा, ये बीच वाला जिसको हमने प्लस करा था इसके साथ। ठीक है, लेकिन हमें ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, और ये जरूरी भी है क्वेश्चन के अंदर, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये ठीक है कि नहीं। सही है, सब समझ गए? Okay, so we will continue this class next week. Okay. इंशाल्लाह। So I will send you some homework, or I will tell you here. I will give you the count 1, count 2 of 5 equal parts. Okay, and some word problems to solve. You have to solve it at home. Okay. ओके I will ask you yes. You have to send the homework in. You have to write in your copy. You have to write in your copy and send it to the group. I will check. ओके Okay. So I hope you enjoy this class. Meet you next week. Okay. Allah Hafiz. Thank you, Miss Arisha. It was amazing learning from you, and you are a very good math teacher. Okay, so see you next week. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. हाफिज।